SBA Publications. Hello everyone, how are you all? I hope you are happy and healthy at your home. This is your mentor Nisha Gola, and today with me we will start our chapter number 13, and the name of the chapter is data handling. So here we have a picture and some question on the basis of this picture. Okay, so Stella and Paul are playing on the beach. तो यहाँ पर स्टेला और पोल क्या है, बीच के बीच पे खेल रहे हैं. Okay, so here objects are given, name of the objects and number of objects we have to write here. So buckets, we have to count the buckets 1 and 2. So here we write 2 buckets. Birds, how many birds are there? 1, 2, 3 and 4. So we will write here 4. Okay, just like that you observe the objects in this picture and count, and after that now we will learn about pictograph. Okay, so the information in a list can be in the form of names and numbers. So जो यहाँ पर अभी हमने information collect की है वो क्या है, names और numbers में है. So ऐसी information को हम क्या बोलते हैं, data. And data can be shown with the help of pictures, और pictures के through हम क्या है, data को दिखा सकते हैं. The pictorial representation of data is called pictograph. जब हम pictures के through data को दिखाते हैं, represent करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं pictograph. Here example number 1. Henry asked all his friends what kind of movies they like to watch. His friends gave him the following answers. अब हेनरी ने क्या किया, अपने फ्रेंड्स के पास गया और उनसे पूछा कि तुम्हें कौन सी किस टाइप की मूवी पसंद है, और उसको ये डेटा मिला है. So here we have types of movies, that is action movies, cartoon, comedy and musical. And number of friends that like that type of movies 7, 4, 3 and 4. Okay. Now the solution is we have to represent this information into a pictogram. Favorite movie type, इसके लिए हमने एक पिक्चर का सेलेक्ट की कि हम इस पिक्चर के थ्रू दिखाएंगे, और इसका स्केल क्या है, एक पिक्चर एक चाइल्ड को दिखा रही है. So action movies liked by 7 students. So here we draw 7 pictures. Cartoon 4. So 4 pictures. Just like that, here we show this information using pictures. So it is our pictographs. Okay. Now example number 2. Given below is the information about students of school who come to school by different means of transport. तो यहाँ पर हमें कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हुए हैं, बाइसिकल, बस, ऑटो रिक्शा, ऑन फुट, जो पैदल चल के आते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कि कौन कौन से जो स्टूडेंट है वो कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, कितने स्टूडेंट्स. वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इनटू अ पिक्टोग्राफ फॉर्म. सो लेट्स सी हियर. So we use here scale, that is smiley, and smiley, one smiley represent to 10 students. Okay, here we make the means of transport, and here we write the scale. It is picture is smiley and one smiley shows to 10 students. So bicycle like by 10, 20, 30, 40 students. So here we make 4 smileys. Okay, just like that, bus, auto rickshaw, and then on foot we can write. After that we learn how to read and interpret a pictograph. So in the school canteen, the following numbers of chips packets were sold during a week. एक वीक में कितने नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड हुए हैं चिप्स के, वो हमें यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग पिक्टोग्राफ. Okay, so here it will be difficult to draw one picture for one packet because we have the large data कि हमारे पास 40 है, 70 है, 30 है, तो अगर इतने सारे पैकेट्स हम बनाएंगे तो नहीं बना सकते. ठीक है, 80 भी है, तो उसके लिए हम क्या है, लार्ज स्केल लेंगे. सो हमने लिया कि 1 पैकेट जो है वो किसको शो कर रहा है, 10 पैकेट्स को. सो द पिक्चर नाउ the pictograph will be like that.
Okay, on Monday we have 40 packets. So 1, 2, 3, 4 pictures we will draw here because one packet shows to 10 packets. Okay, 70 on Tuesday sold out the packets. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 packets we made here. Okay, so just like that you can do this. Now we have question also here. Maximum number of packets were sold on Friday. यहाँ से हमने डेटा से इंटरप्ट किया, डेटा से इंफॉर्मेशन निकाली कि जो ज़्यादातर पैकेट सोल्ड हुए हैं वो कब हुए हैं? फ्राइडे में, एज वी सीन हियर. ओके, द लिस्ट नंबर ऑफ पैकेट्स वर सोल्ड ऑन वेंसडे, और सबसे कम वेंसडे को सोल्ड हुए हैं. उसके बाद 60 पैकेट्स वर सोल्ड ऑन सैटरडे. सैटरडे को 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जो कि शो करते हैं 10 को, तो 60 पैकेट्स सोल्ड हुए हैं. Okay, now we have exercise 13.1 on the basis of this. So first question is, in a class of 50 students, following number of students participate in annual day function. Read the pictograph and answer the following question. तो यहाँ पर हमें 50 स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है, जो क्या है, एनुअल फंक्शन में किसने किस किस में पार्टिसिपेट किया है, कौन कौन सी एक्टिविटी में, लाइक ग्रुप डांस, प्ले, स्पोर्ट्स, सिंगिंग एटसेट्रा. Okay, and one star is showing two students. Okay, so here we have a pictograph and here we have question, how many students were participated in the play. Play में कितने students ने participate किया. So here are 1, 2, 3, 4 symbols are there and one symbol is showing to 2 items. So 4 to the 8. So means 8 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने क्या है, पार्टिसिपेट किया है प्ले में. ओके, सो ऐसे ही आपको ये करना है. In this also we have question number 2. You have to do like that. We have a pictograph. Read the pictograph and give the answer of these question. Here one can is showing to 5 cold drink cans. Okay. Now we have question number 3. In this what we have to do, let's see here. Aban and his friend collected information about the number of books each one has shown below. So किस बच्चे के पास कितनी बुक हैं यहाँ पर वो कलेक्ट किया है. ठीक है, कि अबान के पास 4 हैं, अदान के पास 5, others have 9, Abha has 6 and Apia has 2. So we have to represent this information by means of pictograph. Pictograph पे हमें ये show करना है. तो how do we show? Let's see here. First we make table and we will write here. So we make the table here and we write here names. Okay, and names are Aban, Adan, Adarsh and Abha, and after that Abia. Okay, and here we can use a scale, we can use any picture. Okay, just like I'm using a smiley. So here I use one smiley that is showing to one book. Okay, so Aban has 4 books. So here we have to make 4 smileys. Okay, and Adan has 5 books. So we make here 5 smileys. You can use any symbol that you want. Okay, I have used here a smiley. You can use anything. So just like that you can complete the pictograph and make by yourself. Okay, now we have bar graph. So what is bar graph? Let's see here. A bar graph is another way of representing information. जैसे हम information अभी pictograph में show कर रहे थे, so ऐसे ही हम information को represent bar graph में भी कर सकते हैं. Example, the following is a list of some activities chosen by some student under the CCE pattern. यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, डांस, म्यूजिक, आर्ट, योगा, कराटे, और कितने बच्चे उसको पसंद कर रहे हैं वो लिखा हुआ है. सो हमें इसको स्टडी आउट करना है और
इसके बेसिस पे ये बार ग्राफ बना हुआ है। अब मोस्ट स्टूडेंट हैव चोजन, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने क्या चूज किया है? डांस, so here we write dance. Then dash student have chosen art and yoga. आर्ट के कितने बच्चे हैं? 7 और योगा के हैं 9, 7 9 16. So here we can write 16 students total. The least student have chosen, सबसे कम है ये 6, that is karate. So here we write karate. Okay, so now we have exercise on the basis of bar graph. Let's see here. Exercise 13.2. The bar graph shows the run scored by 5 batsmen in one day match. वन डे मैच में 5 बैट्समैन ने कितने कितना स्कोर किया है। तो हमें बार ग्राफ को पढ़ना है, इसको अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना है और उसके बाद आंसर्स देने हैं। Who scored the most run? So here we can see 70 is the most highest runs and it is made by Sachin. So here we write Sachin. Okay. So just like that, you have to read the bar graph and give the answer of these questions. Okay. Now, so student, now we have here fun activity that you will do by yourself. So student, this is all about our chapter. I hope all the concept of this chapter has been clear to you. In this we learned about pictograph and bar graph, and we also learned how to represent data and interpret the data. So I will meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.